Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English Grammar Tips. Today our topic is Sources of Information. Unit number 7, Code 837, Educational Research for MA Education and MA Students. तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले Objectives of the unit. Number 1, explain the main sources of data in education research. सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि मेन सोर्सेज क्या है एजुकेशनल रिसर्च के। आइडेंटिफाई द प्रीलिमिनरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाई द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कस द सेकेंडरी सोर्सेज of information and compare direct and indirect sources information available in the form of education literature. Introduction. Sources of information have great importance in educational research. In order to locate the use of educational research, one must be familiar with the major sources of information. जब भी आपने रिसर्च करनी है तो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किधर किधर से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। नंबर 1, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी और एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्रीलिमिनरी सोर्सेज आर यूज्ड टू लोकेट बुक्स, आर्टिकल्स। जो प्रीलिमिनरी है सोर्सेज हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो इनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स, articles and other educational documents that relate to the research problem. Now, preliminary sources. Most preliminary sources are either indexes such as educational indexes which give the author, title and place of publication of educational writing, or abstracts such as psychological abstracts which give a brief summary and abstracts of each publication listed in addition to bibliographical data. Preliminary sources are usually organized by subject. तो ज़्यादातर जो प्रीलिमिनरी सोर्सेज हैं जो वो उसके बारे में कहा जाता है कि इधर इंडेक्सेस, चाहे वो इंडेक्सेस हों सच एज एजुकेशनल इंडेक्सेस, जैसे कि एजुकेशनल इंडेक्सेस होते हैं विच गिव द ऑथर टाइटल। जो ये सोर्स है, यहाँ पर आप इस हेडिंग में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीलिमिनरी सोर्सेज में कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें ऑथर टाइटल है एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशनल राइटिंग। तो किस जगह पर ये पब्लिकेशन हो रही है, एजुकेशनल राइटिंग किस जगह पे हो रही है, और एब्स्ट्रैक्ट्स सच एज साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, उसमें साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया जाता है विच गिव अ ब्रीफ समरी एंड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ ईच पब्लिकेशन लिस्टेड इन एडिशन टू bibliographical data. Primary sources. Likewise, primary sources are those publications in which person who carry out research report their findings. यानी वो अपनी जो रिसर्च होती है उसे आप ने पेश करना है। Primary sources information is communicated directly from the researcher to the reader. Directly from the researcher to the reader. Most of primary sources in education are journals. Each article in these journals typically reports on a different research project. Books are frequently contain reports of original research and they then become प्राइमरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन। ये नीचे आपको उन्होंने बताया, ये मैंने पिक्चर एक ऐड की थी जिसमें प्राइमरी सोर्सेज में बुक्स हैं और पेंसिल दिखाई गई और माइक्रोस्कोप दिखाई गई। सो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज आर पब्लिकेशंस इन विच द ऑथर इज रिपोर्टिंग ऑन रिसर्च दैट समवन एल्स कैरिड आउट। यानी सेकेंडरी सोर्सेज में आपने लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स, लोगों की रिसर्च जो है उनको आपने पढ़ना है और उनको फिर कोड करना है कि मैंने फ़लाँ जगह से ये पढ़ी और मैंने वहाँ पे इसका जिक्र सुना और फिर मैंने इसको यहाँ पे कोड किया।
सो सेकेंडरी सोर्सेज ये होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उसमें आपने जो रॉ फॉर्म में आपके पास डाटा कलेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन प्राइमरी सोर्सेज या प्राइमरी इंफॉर्मेशन। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी सोर्स इन एजुकेशन आर स्कॉलरली बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्कॉलरली बुक्स हैं और टेक्स्ट बुक्स होती हैं। The disadvantage of secondary source is that the author may not accurately report the primary source findings. The advantage of secondary source such as textbooks in that they give the reader a quick and readable overview of research and opinion related to educational topics covered. Direct sources of information. The direct sources of information in the field of educational research: periodicals, literature found in journals, books, yearbooks, monographs and bulletins, graduate, doctoral and other theses, miscellaneous sources such as government publications on education. Direct sources continued: periodical literature, books, monographs, yearbooks and bulletins, theses and dissertations. Periodical literature. This is a very effective source of information. In education, many journals are being published on quarterly basis by facilities of education of different universities in Pakistan. These journals are source of information on different topics and issues. Periodicals. Information sources include periodicals, which are items published at regular intervals like weekly, monthly or quarterly. Periodicals include magazines, scholarly journals, trade journals and newspaper. Periodicals continued. American Educational Research Association has been publishing periodicals entitled Review of Educational Research since 1931. It appears regularly 5 times a year, covers a series of 11 major fields or topics. Educational Resource Information Center ERIC 1966 is a monthly periodical. It provides abstracts of current studies, conferences and projects in education. Major journals on education: UK, British Journal of Educational Psychology 1931 to date. जो मेजर जर्नल्स हैं, जो ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट जर्नल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ये उनकी लिस्ट है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ 1952 टू डेट, आज तक ये चल रहा है। ब्रिटिश जर्नल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1970 टू डेट, एजुकेशनल रिसर्च 1958 टू डेट, Durban Research Review 1952 date, Educational Review 1947 to date, Scottish Education Studies 1967 to date, Trend in Education 1961 to date. Books, monographs, yearbooks and bulletins include Handbook in Research Technology, publisher in 1963 by American Education Research Association, edited by Nathaniel Lesgage, summarizes recent research on teaching and supplies excellent data regarding methods, subject fields and the like. Number 2, Mental Measurement Yearbook 5-volume directory edited by Oscar K. Bruce, list in 2 separate sections. All educational, psychological and vocational tests available commercially. Review of books on testing, International Yearbook on Education since 1948, UNESCO cooperation with the International Bureau of Education publish annual survey, provide most significant event of education in world. Cumulative Book Index published since 1898. Directory provides list of all books published in English language. Number 5, Yearbook of Education 1932, 1940, 1948, 1973 published in
Association with the University of London, Institute of Education and Teachers College, Columbia University, New York by Evans Bros. Thesis and dissertations. Thesis and dissertations prepared to meet the requirement for graduate degrees usually contain descriptions of completed research, indirect sources of information, encyclopedia of education, education indexes, education abstracts, bibliographies and directories, bibliographical references, radio, TV sport, माइक्रोफिच, कंप्यूटर सर्च। अब इनमें से ये चीज़ें क्या हैं, इनको भी ज़रा एक मरतबा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये इनका क्या काम है। नंबर 1, Encyclopedia of Educational Research and Education Index. A project of American Educational Research Association was first issued in 1940 and was revised in 1950 under the editorship of Walter S. Monroe. Most recent edition, Chester W. Harris Encyclopedia, is good source of researchers. Educational Index. H.W. Wilson Company 1929 to date proved one of the most useful reference tool available to educators. Since June 1961, main attention is given to periodical articles. Over 300 periodical related to education are indexes. Education abstracts. ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। Dissertations abstract, monthly publication since 1938 by university. Microfilms offers a bibliographical index and concise abstract of doctoral dissertation completed in a number of cooperating universities. Psychological abstract, monthly since 1927 by APA, catalogs new books and articles on psychological with a short abstract of each. Sociological abstract, quarterly periodical worldwide organization of sociological to present abstract to all sociological works bearing in education. Bibliographies and directories. Use these directories and bibliographies to find information about newspapers, such as identifying newspaper by area and determining what papers or magazines have been published on special topics or for particular audiences. This list is not exhaustive. Consider visiting the Z6940-Z2 Z6960 section at Shepherd Library. References to browse through newspaper, newsletter, magazine and other periodical directories and bibliographies. Biographies. Biographies are also help in getting information about the related topic. Sometimes in chronological order, biographies normally provide sequential information required for thesis. Radio and TV sport. The information in sport of various topics provided by audio and video through radio and TV is also useful. Microfiche. It is another source of information for researchers. It contains a lot of information on the relevant topic, avoiding the bulky text material. Hundreds of pages can be stored in a microfiche. It is a short film and hundred of pages are stored in that. माइक्रोफिच जो है ये एक छोटी सी चीज़ है, चिप है जैसे, तो ये इस तरह एक काम करती है कि इसके अंदर बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सारा स्टोर कर लिया जाता है। इसके अंदर सारा मटेरियल, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जो है उसे स्टोर कर लिया जाता है ईजीली, और जब ज़रूरत पड़े फिर उसे उस हिसाब से इस्तेमाल कर लिया जाता है। कंप्यूटर सर्च।
In order to conduct a major review of literature or to make an important educational decision about any research, a manual research process is time consuming and tiresome. In such situation, a computer search of the appropriate preliminary sources is important because of being low cost, speedy and immediate information provides a printout of the required aspect sections and permits simultaneous searching. थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।